Yes, Meenakshi. Sometimes I'm thinking about my kids, especially about my son. Hmm. I'm thinking maybe who will get pain today. Oh, I don't know when we'll getting pain. So what will happen? I don't know. Maybe. Oh no. But at the end of the day, it happened. The same thing. What I think uh, Hmm. the whole day. So yeah, end of the day, it happened. Hmm. So you Yeah. believe that your son So will get pain and and he gets the pain. That's what you're saying? yeah, yeah. Okay. But sometimes when I am thinking, oh, especially when I wake up in the morning and I am thinking today is it will going very well and we will be very happy. We all are very happy and doing some special, so it will be very special day. Hmm. So yeah, end of the day, yeah, I saw that day. It was really, really nice. Yeah. So Hmm. everything was perfect. Don't happen any negative thing. Or yeah, Hmm. I'm very happy. Hmm. So Yeah. yeah. So Hmm. Belief also that my life is bad is also a belief. My I always suffer is also a belief, right? Why do I always have to yes, suffer yeah. is also a belief. And I'm a victim, it is also a belief, right, Minakshi? So the more I feel I'm a Yes, victim, Didi, it was a great experience. Yeah, about this believeness. Yeah, I'm a yeah, victim. So yes, yeah, yes. Many of us women, we have this belief that I am a victim. मेरे साथ हमेशा बुरा होता है. So it's a yeah, belief most of system the which, time. Yeah, yes. yeah, And because of this belief system, like we suffer and then we think मेरे साथ क्यों बुरा होता है, because मैं बिलीव ही करती रहती हूँ कि मेरे साथ बुरा होगा, अच्छा नहीं है. The universe is like unconditionally it is supportive and unconditionally loves us. So it has no mind of its own. It loves us so much. So if you're believing that my life is bad, it wants to support you even in that your life is bad. सो इट इज दैट काइंड ऑफ लव इट हैज कि तुम जो भी बिलीव करते हो मैं तुमको पूरा सपोर्ट करूंगा. माई लाइफ इज आई एम अ विक्टिम, माई लाइफ इज पेनफुल, then it will make sure that your life is painful. Okay, so what we believe in, it affects our life. Yes, next, who wants to share? Yes, Ria. হ্যালো দিদি, কেমন আছো? ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? হ্যাঁ দিদি, ভালো আছি। দিদি, বিলিফ সিস্টেম যদি বলতে চাই, মানে শেয়ার করতে চাই, সেটা হবে তোমার সাথে আমি একদিন 1-to-1 একটা সেশন করেছিলাম আমার পায়ের সমস্যা নিয়ে। হুম, হুম, তো হুম, আমার দীর্ঘ প্রায় 1.5 বছরের মতো হচ্ছে আমার পা নিয়ে হচ্ছে আমি সবসময় চিন্তা করতাম যে আমার পা হয়তো আর ঠিক হবে না, বা আমি হয়তো আর আগের মতো হচ্ছে দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি করতে পারবো না। এখনো যদিও করতে পারি না, তারপরে আমার হচ্ছে যে মনে হয় যে আমার পাটা আগে থেকে অনেক বেশি ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে, যেটা প্রায় আগে মানে ছিলই না বলতে গেলে। ওই হুম, মেডিটেশনটা করে বা 1-to-1 সেশন করার পর আহ আমার চিন্তা আসছে, অথবা আমার বিলিফ সিস্টেমে এটা অ্যাড হয়েছে যে যে আমার পাটা হয়তো ঠিক হইতে পারে। এন্ড হুম। আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে এটা আমি আসলে জানি না এটা মানে কতটুকু কি, বাট বিলিফ সিস্টেম তুমি একটা ক্লাস নিয়েছিলা, মানে মানির মানে কি টাকার একটা হুম, ক্লাস নিয়ে। হুম, আহ হুম, ওইটা করার পর থেকে আমি সবসময় হচ্ছে যে লাইক এভরি টাইম হচ্ছে যে আমি বলতাম যে আমি অনেক রিচ, আমার অনেক টাকা এসে মানে ওগুলাই বলতাম। হুম। সাডেনলি হচ্ছে যে মানে আমি অনেক মানে কোথা থেকে টাকা মানে আসতো আমি নিজেও জানতাম না। তো ফ্যান্টাস্টিক। আমার কাছে মানে বিলিফ সিস্টেম হচ্ছে এগুলাই আর কি। তো আমি এখন থেকে সবসময় নিজেকে মানে সবসময় মোটিভেশন দেওয়ার চেষ্টা করি যে যে
এটা সম্ভব, আমার দ্বারা এটা সম্ভব, আমার দ্বারা এটা সম্ভব, সব সম্ভব। Hmm. So she has shared her experience. Okay, friends, here she has shared her experience that she had a pain for a long time in her leg, and she thought she will never be able to walk or run the way she used to do before. She was giving up hope. So that's the time I did the therapy on her. Okay, and it has improved so much, because even therapies, the inner child and everything that we do is mainly to work on the belief system. Uska belief kahan pe hai, trauma kahan pe hua tha, और ट्रॉमा से उसने क्या बिलीव बनाया है। अगर उसने बिलीव बनाया है कि मैं चल नहीं पाऊंगी जीवन में, या फिर मैं सेफ नहीं फील करती हूँ, तब भी लेग्स कभी अफेक्टेड होते हैं। तो व्हेन यू रिमूव द बिलीफ सिस्टम, इट हैपेंड विथ आनंदिता ऑल्सो, शी ऑल्सो हैड सम पेन इन द लेग। सो इन थेरेपीज व्हाट वी डू इज नथिंग बट, थेरेपी में ग्रेटर लेवल पे हम डीप हिप्नोसिस हिप्नोसिस करते हैं, जहां पे उनका डीप बिलीफ सिस्टम क्या है उसको देख के उसको वहीं पे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो बोथ like Ria and Anandita, they had miraculous transformation. They had, their legs started working perfectly fine almost after those therapies. So these are not nothing that I have done any magic. It's just the scientific way of getting into it and working on their belief system. So socho how important belief system is. Hmm? In the same way, now what she has said is that she's saying that I took one class on money, and there I was training them how your belief system, you can have belief system on money. Like, you need to work hard to get money. Money does not grow on trees. Money is a challenge. Money is pain. Only evil people have money, and all these. There are so many belief system you can have around money. So if you can shift the belief system, you'll start seeing money flowing in your life. That's what she's saying, that after she shifted the belief system, she started working on the belief system that, she's rich. She started feeling she's already wealthy, she's rich, she walks, talks like that. And she can see that suddenly from nowhere money starts pouring in her life after working on her belief system. What a beautiful experience of Ria. Thank you so much, Ria, for sharing this experience. Others, I'm sure, will get encouraged with this experience. Right? So anything else, Ria? আমি ঠিক মতো এক্সপ্লেন করেছি তোমারই এটা, তুমি যেটা বলতে হ্যাঁ চাইছো? দিদি, হ্যাঁ দিদি। Okay, thank you so much. Fuldi, are you there? Fuldi? Her mobile is not working properly. That's why she takes a long time to unmute, she's telling. So that's fine. Anybody else who wants to share? Swagata? হ্যাঁ, মানে ওই আমি একদিন তোমাকে ফোনে বলেছিলাম যে ওই ফ্যামিলির মানে একটা প্রবলেম আছে না ভাইয়ের, হুম তোমার বউকে নিয়ে, মানে ঠিক আমার সঙ্গে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় না। হুম তো হুম এইবার আমি ইন্ডিয়া যাওয়ার ক্ষেত্রেও সেই ভয়টা ছিল যে এতদিন বাদে আবার যাব, মানে কিভাবে চালাবো কিভাবে করব। তো আগে থেকে ভেবেছিলাম যাই করুক না কেন নিজেকে, নিজের জায়গায় নিজে বড়, নিজের ওটাকেই ঠিক রাখবো। আর নিজের বিলিফ এটা ছিল যে যাই বলুক না কেন, মানে আমার নিজের কর্মফল বা কিছু পাস্ট লাইফের কিছু ওর সঙ্গে আমার কিছু মিক্স ম্যাচ হয়েছিল সেটা আমি, বা অন্য কারোর কাছে করেছি সেটা ওর থ্রুতে আমি পাচ্ছি, এটাকে হুম ভেবে চলো। তো হুম সত্যি কথা বলতে অনেক রকম ভয় ডর নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মানে কিছু এমনও ঘটেনি, আর কিছু এমন কিছু ঘটলেও সেটা মানে ওভারকাম করতে পেরেছি, যেহেতু নিজের মধ্যে বিলিফ ছিল যে নিজেকে নিজে মানে যেটা আসবে সেটাকে ওভারকাম করতে হবে। আর হুম সেটার মধ্যে নিজের দোষ আছে বলে সেটা সে ওইভাবে বলছে, হুম সেটাকেও কারেকশন করতে হবে। তার জন্য মানে এই 40 দিনের মধ্যে বলা যায় নিজের বিলিফটাকে কাজে লাগিয়েছি বলে মানে দুজনের সম্পর্কে কোনো এরকম কিছু হয়নি, এমনকি আমরা একসঙ্গে ঘুরতে যেতে পর্যন্ত পেরেছি, নইলে কোনো জায়গায় ট্যুর হুম করার আগেও একটা প্রবলেম সৃষ্টি হয়, সেটা হুম এবার হয়নি। এমনকি লাভলি। সে ইভেন্ট যাওয়ার আগেও বলছে নেক্সট ইয়ার কোথায় যাবে সেটা আগে থেকে প্ল্যান বানিও। Awesome, awesome, fantastic.
though it is not this experience is not completely an experience of belief system, but what she's saying is that she had challenges with her sister-in-law, and before she traveled from Denmark, she was worried. India. Okay, she was Yeah. worried about whether how they are going to stay together and whether there will be fights and everything. She knew that she has to work on herself, because this philosophy talks about the fact that you have to work on yourself. हम पे ही हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं. We have our past life karma, our thought process, our mind pattern and everything, for which we work on ourselves, and that's how the things change. That one she understood. That is not a belief. Another, I can understand from her discussion, a subtle belief. Now she starts believing that, because I think she meditates or whatever, she believes that she can overcome this problem. She believes that this problem will not happen. She started believing that she has the power to change this situation that she normally has with her sister-in-law. Okay, she started believing that. She started having a new belief, right, Swagata? That I can change the problem with my sister-in-law. Yes. Yes. Yeah. So because she started having the new belief, because she has the power of meditation, she saw that this time, wherever she used to come, she had problem, but this time it was such a beautiful time she had with her sister-in-law, that her sister-in-law now is waiting. They both are waiting, when are they going to have next holiday together. What a fantastic experience. Awesome. Okay. Great. Thank you so much. See, when we are sincere, these people are actually sincere, You will see, especially Minakshi, Swagata, they are actually very sincere. When you are sincere, you are surely going to get results. So sincerity results dikhata hai. Okay? Even Ria, she has started becoming sincere, and I want her to become sincere. She's normally like थोड़ा बहुत इधर उधर करती थी, लेकिन आजकल कोशिश कर रही है Ria to join regularly. Okay. Next, yes, Afsanji was trying to unmute. You want to share anything? 1 minute. Hi, Sanjukta. Yes. When I started with this meditation, first I used to get targeted with everyone. So I will not say that I used to think, but it used to happen with me. But after doing this meditation, I said, I learned one thing. Why should I harrow myself, my health? Let people talk whatever they want to talk. Where I'm right, I'm right. I don't have to justify myself. Where I'm right, I'm right. So that made a big difference for me. And that because of that, my health was not hampered. Or else I used to keep on thinking, why that person said that. Should have not said it. He should have not said like that. Where I know I'm wrong. Where I'm right, and you want me to say that I'm wrong. Again, this is a problem, Afsanji, okay? So it is not about proving anybody you are right or wrong. It is being at peace with yourself. Yeah. But when you feel that you're not doing anything wrong, then why should I justify myself also? Then I learned but this is not a belief system. This okay, yes, you have, because it takes time. Meditation takes time. Okay, meditation is not it and it's okay. We are growing, we are learning. First is to not get affected, knowing that I'm right, so I don't need to justify. It is just the first level of meditation. Second is, let me also focus on where I'm not right. Let me also work on the places, because deep meditation, it doesn't come with with very little meditation. Deep meditation will show you where you are wrong. And that's when, and the beauty of meditation is that despite of being wrong, you will love yourself. And you will say, wow, this is my mistake. Wow, fantastic. I've caught one mistake of mine. I'm going to work today on this mistake. Okay. So I rejoice every day. I learn I say aha moment. Oh, this is how I think. Oh, this is how I feel. Oh, I should not. Oh, let me work. Okay. Instead of
See, it is people, non-meditators, they're always right. उनके साथ कभी आप पंगे में जीत नहीं सकते क्योंकि वो हमेशा राइट है। उनको पता ही नहीं राइट रॉन्ग क्या है, इसलिए हमेशा राइट है। बट मेडिटेटर्स, दे ऑलवेज नो दे आर फर्स्ट रॉन्ग। इफ यू आर अ जेन्युइन मेडिटेटर, दे विल, द मोमेंट एक प्रॉब्लम आएगा, वो पहले फोकस करेगा कि मेरा क्या थॉट प्रोसेस है, मेरा क्या फीलिंग है जिसके वजह से मैं ये ट्रिगर कर रही हूँ, और वो डीप मेडिटेशन में जाएगा उसको रियलाइज करने के लिए। दिस इज हाउ आई टॉक, दिस इज हाउ आई फील, दिस इज हाउ आई portray. Okay, it's okay Yeah. because it's a step. First step you are, and it is okay. First, at least आपका health तो सुधर रहा है. The next Yeah. step is to go into deep meditation to figure out where you are not also right, and that is also okay. It is not about judging and criticizing ourselves. It is about fun. I remember बहुत साल पहले ना, because meditation also teaches us to focus on our own mistakes and keep focusing on where what is it that you need to change. एक टाइम के बाद बहुत लोग क्रिटिकल भी हो जाते हैं, ऐसा भी एक्सट्रीम आता है जहाँ पे मैं बुरी हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। डीप मेडिटेटर्स कभी कभी ऐसे सिचुएशन में भी चले जाते हैं that they don't understand the difference between figuring out what is wrong and criticizing. They keep criticizing themselves. So there was a time when I was criticizing myself, thinking that I am a meditator, I need to work on myself. हर फ्लॉ को मुझे चेंज करना है, मेरे all the flaws that I have, I need to work. And after a certain point of time, I realized I was criticizing. I said, तुम बुरी हो, तुम में ये ठीक नहीं है, तुम में वो ठीक नहीं है, तुम कुछ ठीक नहीं हो, तुम कुछ ठीक से नहीं कर सकते हो. This is another extreme. One extreme is when you are always right. Another extreme of meditators is when you are criticizing yourself for everything. The middle path is that I am wrong, but doesn't matter, I'm still so divine and pure. Because I'm every day working on myself. I love myself even if when I'm wrong. Because I am working on myself, I'm not being arrogant that I will not work. This fact itself makes you feel so, love yourself so much. See, every day I'm learning my own mistakes and I'm working on it. True. Yeah. So having Yeah. that middle path is so important. Okay. And it's okay, this is the beginning when you, at least you are having that peace के कोई कुछ भी करे आप affected नहीं हो रहे हो, आपका body heal हो रहा है. But there is another way, you are still at peace. At the same time, you have to find out your own flaws. Okay? Yeah. Thank you very much. Thank Next. you. Who will be next? Fuldi, yes, and Suchita and Fuldi, they are all. I think this is your first class, right? Suchita and Vaishu. ये आप दोनों का first Yes, class है. हाँ. yes, yes. आपको समझ में आ रहा है बिलीफ सिस्टम कितना है? Even Suchita, for you, do you realize what I did for you in the therapy? याद आ रहा है? I can connect. Yeah, yeah, Yeah. yeah. This is the main crux, that belief But can make us believe can fully destroy us. Okay? I have only one doubt, or you can say Yeah. deep-rooted somewhere it is believe again that I leave the thing in halfway. So uh, I have to work on this belief. It is which is not completely 100%. I overcome this belief, and That's what I said, friends. I will empathize with people who will tell me that I have. Many people have this problem to leave things halfway. Some of the people who had joined my session, they are in terrible problem, but because ये एक उनका habit है, belief system बन गया है, वो क्या करते हैं? मुझे इसलिए इसलिए I cannot be very strong also. So I want to know what is your problem. Let's work it out together. Let's do therapies to understand why do you leave things halfway. Okay? and I can connect with this with you what you explain. Like, yeah, strictness I can take in some way. It is not linked with this class and the attendance and all, but my belief system, I can say, if somebody is trying to uh, be more strict and push me over and above my limits, because I am sincere, organized person. I know I'm putting the effort. Maybe I'm not doing as the other people or other speed. I'm not matching with the other speed.
but then I know I'm not taking it lightly, and still people are trying to push me hard. Then I said, I'm not interested. Let me do it in my way. So So that's why too much of anything is not good, na? Too much of strictness is also not good. But at the same time, see if it is your belief also. Okay? Belief system में क्या है? I'll give you an example. अगर आपकी मम्मी बहुत strict, I'll give you an example. Maybe somebody out of love really wants you to grow. Okay? But आपकी मम्मी बचपन में आपके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट थी और आपको बहुत पुश करती थी. ओके? तो पुश करती थी और इससे आपका ना एक बहुत ट्रॉमा डेवलप हो गया है कि मुझे स्ट्रिक्टनेस से बड़ा किया गया था, या फिर पुश करके जो मैं नहीं चाहती हूँ वो उसी को मुझे पुश करके करना पड़ा. ओके? Now what happens is that this person grows up, and when this person grows up, this person meets a boss, okay, in the company, and this boss कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला तुमने ये काम क्यों नहीं किया. Immediately उसको क्या होगा? She will be flared and she will say कि I will not, just see, okay? She will be flared and she will say मुझे नहीं करना है, जाओ जो करना है कर लो. Do you know why it happens? Because she sees her mother in that boss. Inner child trauma heal नहीं हुआ है. Inner child से belief system create हो गया है कि strictness means ये मेरी माँ है. वो सब में जो भी थोड़ा बहुत strict होता है उसको देख के लगता है ये मेरी माँ है. और तब वो क्या करेगा? वो बिकॉज बचपन में मेरी माँ या फिर बाप को मैं रिवॉल्ट नहीं कर पाई, अभी तो मेरे पास शक्ति आ गई है ना, तो मैं either I will directly revolt or I will say in passivity, I will say that मैं कभी कभी आपने देखा है बॉस ने आपको प्रेशर दिया है कोई काम कंप्लीट करने के लिए और आप क्या करते हो? आप बॉस को मुंह से नहीं बोलते हो लेकिन करते भी नहीं हो वो काम. ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है सुचिता? या करती नहीं हूँ वो नहीं, but then I am like that productivity and speed will go down, हाँ and हाँ, because that's why, performance is हाँ, yeah. so that's why you have to heal that belief system that that I cannot see this strict person, that my past in everybody. And पता है तब क्या होता है? हस्बैंड छोटा सा भी कुछ बोलता है ना, हस्बैंड को भी लगता है वो स्ट्रिक्ट है, मुझे नहीं सुनना है उसका बात. ये हुआ है. this is pure this is what happens. Okay, so this is how I think, oh, she cut off. Okay, she'll join again. So this is what happens. Okay, so we have to work on मेरा लेयर क्या है, मेरे अंदर का जो लेयर है वहां पे मैं क्या बिलीव करती हूँ उस पे मुझे वर्क करना है. Okay, and then we can find out. So there are so many belief system जिससे हमारा जीवन बनता है. क्या बिलीफ होता है? माई लाइफ इज पेन. आप ये बोल सकते हो माई लाइफ इज फिल्ड विथ पेन, ये एक बिलीफ सिस्टम बना सकते हो. दूसरा बना सकते हो माई लाइफ इज फिल्ड विथ जॉय. आप जो भी बिलीफ सिस्टम बनाओगे, यूनिवर्स अनकंडीशनल है, वो बोलेगा तथास्तु. पैसे के मामलों में भी सही, रिलेशनशिप, मुझे तो कभी प्यार नहीं मिलता है. द मोमेंट यू फील लाइक दिस, मुझे कभी प्यार नहीं मिलता है, ये बिलीफ सिस्टम है, तो आपको कभी प्यार नहीं मिलेगा. आप जितनी बार भी कोशिश करो, आप बहुत कुछ करो, लोगों से प्यार मांगने का कोशिश करो, कुछ भी करो, आपको लगेगा इस बार तो मुझे प्यार मिल गया, लेकिन फिर से सेम आएगा, सेम चीज होगा, फिर से धक्का मिलेगा प्यार से. बिकॉज आप खुद बिलीव ही नहीं करते हो कि आप प्यार के लायक हो. जब when you will change the belief system, how do? We do the opposite sentence. We use the opposite sentence, right? What is the opposite sentence that we use? आई एम लव्ड. अगर हमेशा मेरे दिमाग में ऐसा लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, कोई प्यार नहीं करता है, अभी मैं नया सेंटेंस यूज करूंगी कि मुझसे सब लोग प्यार करते हैं, सब लोग प्यार करते हैं. आई एम सो मच लव्ड, आई एम सो मच लव्ड. ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ वी वर्क ऑन द बिलीफ सिस्टम. कल बिलीफ सिस्टम के साथ ना वी विल गेट इनटू नाउ इनर चाइल्ड. कैसे हम इनर चाइल्ड खुद के ऊपर टेक्निक अप्लाई करके अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं.
So inner child is a beautiful technique which we use through therapies. We also use पर्सनली. अगर आ जाता है इनर चाइल्ड, डेली बेसिस में हमको इनर चाइल्ड यूज करना चाहिए अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए. तो कल हम टेक्निक, एक इनर चाइल्ड का एक नया स्पेशली थिक नाहन का जो बुक से मैं पढ़ी हूँ, बहुत ब्यूटीफुल वे है. इट्स अ न्यू टेक्निक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनर चाइल्ड. कैसे हम इनर चाइल्ड के साथ मोमेंट टू मोमेंट बात करेंगे. विल टॉक अबाउट दैट टुमारो. ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. आई होप nobody has question. Then I will say goodbye. Okay, thank you very much. Bye bye. Bye, Dee. Thank you, Night. Didi.